Remote desert land is a challenge. In most villages, hardly 4 to 6 hours of electricity could be supplied alternatively in the day or night. बिजली के लिए अप्लाई किया, बिजली के लिए अप्लाई पे बिजली का कनेक्शन नहीं मिला। अब तक 6-7 साल हो गए अप्लाई किए हुए। 4-5 किलोमीटर से नज़दीक कोई लाइन नहीं है, इसलिए कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। Diesel-based water pumps are very expensive, and maintaining them too is a costly affair. Diesel pumps cause environmental pollution. जैसे डीजल पंप हो गया, डीजल इंजन हो गया, और फिर बाद में उसके एम्पेलर वगैरह, इनकी पंखी हो गया, तो इनके नीचे फुटबॉल होता है, यानी कुछ न कुछ वहाँ पे यानी ख़राब होता ही रहता था, तो यानी कि मिस्त्री को लाना पड़ता था। कभी कंप्लेन बदलनी हो तो दिक्कत होती थी। Realizing agricultural hardships by the farmers, Rajasthan government's Department of Horticulture came up with a practical solution: solar pumps. Climatic conditions, solar pumps are very useful because in Rajasthan, out of 365 days, one gets excellent, bright, sunny days for approximately 325 days. Here, solar rays have the excellent energy values. Seeing the conducive conditions in the state during the year 2008-2009, a unique experiment was initiated in the state's 14 government farms. The results were replicated successfully in the fields of 34 farmers in the year 2010-2011 as a pilot project. Encouraged by this success, the very next year, 1,675 solar water pumps were installed in 14 districts of the state. Soon, everyone started realizing the benefit of solar pumps. सोलर आने के बाद तो ये मान लो कि खेती के हमारे सारे संकट दूर हो गए। दूर कैसे हो गए कि हमें बिजली की तरफ देखना ही नहीं था। सुबह सूरज उदय होते ही हम लोग इसको चालू कर देते हैं। ड्रिप हमारे लगी हुई है, जिन ब्लॉक में हमने चलाना है उन ब्लॉक में चला देते हैं। उसके बाद हम लोग अपने अन्य खेती के कार्य कर लेते हैं। Demand for the solar water pumps started zooming up. उन किसानों से फीडबैक लिया, उनसे मिला, फिर हमने अप्लाई किया हुआ है। अब मंशा ये रखते हैं कि अब की बार हमारे को सोलर मिलना चाहिए। In the year 2012-2013, government made special provisions in the state budget for mass installation of solar water pumps. For this, the state made a record target of installing 4,500 solar water pumps in all 33 districts. Realizing the popularity of solar water pumps, the government has made an ambitious target of installing 10,000 pumps in the current financial year 2013-2014. These solar panels directly produce energy with the help of these solar cells. AC or DC motors are connected with this, which in turn helps pump water by solar energy. The DC motor is so effective that it starts working with the early morning sun rays itself, while AC motors have to wait a little while longer for brighter sun. इसकी जो सबसे बढ़िया बात मेरे को लगी वो ये है कि ये मेरे ही खेत में लगा हुआ है, मैं ही इसकी बिजली पैदा करता हूँ सूरज से, और मैं ही Pumps. Depending on the panel design sizes, a strong concrete base of 6 pillars is provided so that in the event of furious winds or storms, they remain firmly grounded at their place. Solar pumps are fitted with manual or auto trackers for synchronization with the shifting directions of the sun. With this, solar panels capture sun rays continuously and keep generating energy. These auto trackers have increased the potential of solar pumps
Water pumps are of two types. One, which can be installed above water surface, and submersible pump, which work under the water. Submersible pumps can pump from 240 meters depth up to 90,000 liters of water per day. हमारे जो पैनल्स कसे हुए हैं इसमें किसी प्रकार की चोरी की वारदात नहीं हो, इसके लिए इसमें एंटी थेफ्ट नट लगवाए गए हैं। इसकी हर एक पैनल पे एक सीरियल नंबर होता है, यूनिक सीरियल नंबर, और RFID भी इसमें डलाया हुआ है जिससे कि किसी प्रकार से इसका मिसयूज़ नहीं हो। और हर एक पैनल पर परियोजना का नाम और किस वर्ष ये सप्लाई हुआ है वो भी वर्ष अंकित है। तो इससे काफ़ी हद तक ये सेफ्टी हो जाती है, कोई इसका दुरुपयोग नहीं कर सके। These measures have provided much needed security to solar pumps. Solar water pumps have negligible number of parts to take care of, and that's why its upkeep is easy. Farmers themselves can clean the solar panels. What we have done is that apart from increasing the maintenance period from 5 years to 10 years, we are also creating a call center. So with these 17,000 systems in the field, it is going to be one of the largest program in the world. So how to operate and how to maintain and how to monitor this system, we are now going to take help of the computers and the cloud structures. So an MIS system, management information system, is being developed, which will have information about the farmers, their field, the solar system, the pump system, the pump's discharge values, what it is actually delivering, the maintenance schedule, all that will be placed in this MIS system, and the controlling will be done by the concerned computer experts. Generally, solar water pumps keep functioning effectively for 20 to 25 years without an additional expenditure. For promoting solar pump use among farmers, a huge share of 86% is borne by the government, of which 30% comes from the Centre's Ministry of New and Renewable Energy, and the remaining 56% is from the state government or from National Agricultural Development Programme. For installing solar water pumps in a district, a massive mass media promotion is carried out for seeking applications from the farmers. And if collected applications in a district are more than the allocated numbers, then a lottery process is followed for selecting farmers. एक दिन अखबार में विज्ञप्ति निकली कि उद्यान विभाग कोई सौर ऊर्जा का प्लांट लगाता है, उसमें सब्सिडी भी है। तो मैंने उद्यान विभाग के कर्मचारी से, ग्राम सेवक से मिला, वहाँ उसने बताया कि उसमें जमाबंदी लगेगी, फ़ोटो लगेगी, आपका आईडी प्रूफ लगेगा और उसके साथ 10,000 रुपये की डीडी लगेगी। तो मैंने ग्राम सेवक से लगा के उद्यान विभाग में 10,000 के फार्म के साथ डीडी लगा के फार्म भरा और वहाँ जयपुर जिले में लॉटरी सिस्टम से मेरा नंबर आया। For collecting water in canal area, reservoirs are constructed which are called diggies. Water ponds or jal haws are constructed in areas where wells or tube wells are used. And in hard surface areas, farm ponds and talai are constructed. A very large number of diggies or storage tanks are being constructed by the state government. To check water wastage and its judicious use, drip irrigation has been made compulsory with the installation of solar pumps. Drip irrigation has helped optimize the water use up to 95%. Besides saving water, drip irrigation has increased productivity, product quality, and has boosted farmers' income. Making drip irrigation compulsory has helped save estimated 48 million cubic meters of water, which in turn has helped irrigate additional 12,000 hectares of land in the state. हमारा उद्देश्य ये है कि
बागानी फसलों से उसे पारंपरिक फसलों के बजाय ज़्यादा फायदा हो और कम ज़मीन में ही उसे अच्छा लाभ हो, कम पानी खर्च हो। इसके लिए निश्चित रूप से जो उसका ड्रिप इरिगेशन है उससे अच्छी फसल हुई है। हमने ये बागवानी पे ध्यान दिया और यानी कि पहले जहाँ इनकम होती थी यानी कि 4 लाख 5 लाख रुपए 30-35 बीघा में, तो आज यानी कि अच्छी 20 लाख के लगभग होती है। 4,000 pumps have been installed in 2012-13 alone, which amounts to 12 megawatt power. Solar pump use has also helped in saving 24 million litres of diesel, which again is a direct financial benefit to farmers. Besides, it also helps in saving them from electricity supply headaches. सोलर पंप हमारे लिए वरदान से कम नहीं है। इसमें हमारा कोई खर्चा नहीं है, बिल्कुल फ्री चल रहा है और बढ़िया काम दे रहा है। सुबह से लेकर शाम तक चलाना है चलाते हैं, डीजल का कोई खर्चा नहीं है। सौर ऊर्जा से सारा काम चला सकेंगे, लाइट ना भी होता भी हम अपना ड्रिप सिस्टम चला सकते हैं। सोलर पंप जब से उपयोग में आया है हमारे यहाँ, तो उसके बाद में हमारा एक तो डीजल का बचत हो रहा है। पहले खुला पानी रात को देना पड़ता था, सूर्योदय के होने के बाद में बड़े आराम से दातन कुल्ला करके फिर जाके सोलर चालू किया और पानी दे देते हैं। रात को सांप का बिच्छू का डर रहता था, टॉर्च लेके खेत में जाना पड़ता था और वो अब नहीं जाना पड़ रहा है। For spreading the use of solar pumps among farmers, Rajasthan government has plans to install 100,000 solar pumps in the next 5 years. The whole energy which is there available throughout the day, I am not sure if it is going to be used for irrigation for throughout the day. So the remaining time when the energy is not used for water irrigation, we are going to provide a 2-way or a 3-way switch by which the energy can be diverted. When it is not being used for the pumping of water, then it can go for home lighting. Women folk, particularly in the villages, can use it for sewing machine. Number of small scale industries ideas can be developed. So in future we can even claim carbon credit, and it is possible that if the cost of the carbon credit goes high in the market, then we may perhaps recover the full cost or some part of the cost of the investment which we are making on these solar pumps. Benefits of solar pump use is clearly visible all over Rajasthan. In a dry state like Rajasthan, it is very important to save electricity and water and simultaneously increase your farm yield. The only solution is to install solar water pumps and drip irrigation, which not only saves electricity and water but also helps in increasing farm yield. Rajasthan has entered the Limca Book of World Records for installing